Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start the counting rules. You have already read about that. You have a pretty good idea about that. But maybe new things will be added with some modifications. Counting rules are basically can be bifurcated into the addition. We know very well how to do that. Multiplication. We have a pretty good idea about that. The permutation rule and the combination. Maybe most students have an idea about that. Maybe few have not. So no problem at all. We will just take a bird eye view of the addition and multiplication rule because you have already known that. And then we will go to the permutation and combination. So many times a person must know the number of all possible outcomes for a sequence of event. Okay. To determine this number, 4 rules can be used, which are known as addition, multiplication, permutation, and combination. As I told you, the first 2 are very familiar with you, and the second 2 are maybe familiar with the few or majority. So we will discuss it in detail. So the addition rule क्या कहता है हमें? Very quickly, a bit technical. जिसे हम addition कहते हैं, add कर लो यार. उसके पीछे rule क्या exist कर रहा होता है? The rule is that behind that working is out. If a task can be done in n1 ways and a second task, ठीक है? Second take, sorry. Certainly that was a second task in n2 ways. And if these two tasks cannot be done at the same time, ये याद रखनी है बात. Like the mutually exclusive वाले थे ना हमारे पास, cannot be done at a same time. Then there are n1 and n2 ways to do either task. So this is the basically technical rule which is working behind addition. Very simple example. So suppose we have to write an article and we have 2 lists of topics. How many articles altogether can be written from these topics? Certainly, the main concern is the topic. Then we can write. Okay. So the additional information is given to us. First list contains 6 topics. Second contains 8 topics. So altogether, certainly they are 14 topics on which we can write the articles, but we have to choose any one of them at a single time. So what is the multiplicative rule? Kindly have a look. जो मैं slide छोड़ रही हूँ वो आसान होती हैं, examples हैं, already सारी given है. Just have a look and then discuss if you did not understand them. अच्छा जी, multiplication rule में क्या होता है? In a sequence of, अब थोड़ी सी slide definition आपने देखी, एडिशन में होता है एक टास्क हुई और दूसरी टास्क हुई और उसको हमने ऑल टुगेदर कर लिया. ठीक है जी. मल्टीप्लिकेटिव रूल में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? इन अ सीक्वेंस ऑफ एन ऑपरेशन, टोटलिटी आपके पास सेम है 1 से लेके n तक. वहां पर क्या थी? डिफरेंट हो सकती है एडिशन में. सो फॉर द मल्टीप्लिकेटिव रूल इन अ सीक्वेंस ऑफ n operations in which the first can be, या one has k1 possibilities and second has k2 possibilities of the sequence. वो sequence कौन सा है? n operations का है. उनमें से एक sequence की possibilities हैं k1, दूसरे की हैं k2. So how many then can be all together over there? k1 into k2. This is obvious. उसी sequence पे से ले रहे हैं आप. For example, if a woman has 3 skirts and 4 sweaters, how many outfitters are possible? 3 skirts, possibilities is a k1. 4 sweaters, possibility is a k2. So they are outfitter कितने हो सकते हैं उसके पास? 3 into 4. एक क्वेश्चन दी हुई आपको. When one must make a choice from one category and a choice from another category, one multiplies the number of choices, all choices in the 2 categories. So this is the rule basically working behind
multiplication. Similarly, one more example. A paint manufacturer wants to manufacture several different paints. Okay. The categories includes color, type, texture, use. Colors कौन-कौन से हो सकते हैं उसके पास? Red, blue, white, and so many categories over there. और types क्या है उसके पास? Latex है और oil है. Oily paint है और latex. Texture क्या है उसके पास? Flat है and high है and similar. Use क्या हो सकता है उसका? Outdoor and indoor, both ways. So these are different categories with different numbers of options. But आपका scenario क्या है? वही हम कह रहे थे ना कि एक ही sequence is n from 1 to red to indoor. So how many different kinds of paint can be made if you can select one color, one type, one texture and one use? So हर category में से जो कि एक ही sequence में lie कर रहे हैं हमें pick करना है. So we will see कि हर category में totality कितनी है. Like colors कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. Types कितनी हैं? 2. Texture कितने हैं? 1 2 3. And use कितने हैं? 1 2. So we have to count basically the categories and then multiply like this. Since there are 7 color choices हो सकती हैं, 2 type choices, 3 texture choices and 2 use choices. The totality मांग रहा था ना, तो 7 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, तो all possibilities will be like this. 84 हो सकते हैं हमारे पास total possible different paths जो इस information से हमें given above information से हमें मिल सकते हैं. अच्छा जी, इसी तरह एक और एग्जाम्पल, इसको जरा गौर से देखना है, इसमें और आउटकमिंग वाली जो होगी हमारी अपकमिंग उसमें क्या डिफरेंस होगा. The manager of a department store chain wants to make 4-digit identification cards for her employees. अब कीप इट माइंड क्या कह रहा है वो, एक मैनेजर है डिपार्टमेंटल स्टोर चेन का जो व्हाट ही वांट्स ये 4-digit आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाना चाहता है फॉर हर एम्प्लॉइज बनाना चाहती है. हाउ मेनी डिफरेंट कार्ड्स कैन बी मेड इफ शी यूजेस द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6. उसके बाद डिजिट्स की चॉइस क्या है? 1 to 6. और उसने असाइन क्या करना है, उन्हें असाइन करना है 4-digit नंबर. सो हाउ वी कैन उसे विजुअलाइज किया करें. ठीक है, एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बता दी है, एंड रिपीटेशन आर परमिटेड. आपको परमिशन है कि अगर रिपीट हो जाए तो रिपीट तो होगा ना, ठीक है ना, नंबर रिपीट हो सकता है आपका. मीन्स टू से इसे विजुअलाइज करते हैं. Since there are 4 spaces to fill on each card, हर कार्ड में 4 डिजिट थे ना, तो हम 4 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4. नंबर्स कौन से हैं जिनमें से उसने चूज करना है? 1 to 6. So there are 6 possibilities for the first choice. There are 6 possibilities for the second choice. There are 6 possibility for the third choice, and there are 6 possibility for the fourth choice. 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, 1 to 6 कुछ भी आ सकता है. And then all together they are 1296 उसके कार्ड्स बन सकते हैं. यहाँ पर एक चीज उसने हमें रिलैक्स की हुई है, एंड रिपीटेशन कैन परमिटेड. फॉर एग्जाम्पल रिपीटेशन अगर परमिटेड ना हो फिर क्या हो? फर्स्ट तो चॉइस हमारे पास 1 to 6 ही हो, सेकंड की क्या होगी? जो फर्स्ट नंबर पे चूज हो गया, मे बी इट्स 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है ना 1 से 6 के दरमियान. सो पहली दफा अगर एक चूज हो गया, लेट्स से 1 चूज हो गया, तो वो रिपीटेड नहीं है, 1 1 नहीं आ सकता. तो इसका मतलब 1 को हमने छोड़ दिया, डिस्कार्ड कर दिया. तो सेकंड चॉइसेस हमारे पास कितनी रह गई? 2 3 4 5 6, 5 रह गई. फिर हमारे पास क्या होगा? अगर वो भी डिस्कार्ड हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, तो 4 रह जाएगी, फिर 3 रह जाएंगी. सो इन दैट वे the same example can be turned into this.
What if repetitions are not permitted? ये भी ख्याल रखना है, जिसे हम विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसे इनिशियल स्टेट पे तो इतना गौर नहीं किया जाता, लेकिन व्हेन वी ग्रोन अप तो फिर हम इसको गौर करते हैं, यार ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम रिपीटेड विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट उसकी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स डेवलप कर रहे हैं। सो कीप इट माइंड, अगर तो कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, जैसे यहाँ पर अगर वो ये ना भी कहता और कहता इफ शी यूजेस द डिजिट 1 to 6, तो हम इसे परसीव क्या करते हैं? विद रिप्लेसमेंट। याद रखिए, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन ना होती तो भी हम इसे विद रिप्लेसमेंट ही कहते। हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए he has to give us some caution. What if the repetition are not permitted? उसे बताना पड़ेगा हमें कि repetitions are not allowed. So then we will go for that. 6 into 5 into 4 into 3. So dear students, you have an idea about that. Thank you very much for watching my video.